organized by the Corporate Resource Cell, CRC and Finance Club of Bharati Vidyapit TMS in collaboration with MCX Metal and Energy Trade with Trust. As an Thank you so much, sir. Before we dive into the session, I'd like to introduce our today's guest speaker formally. Mr. Jaydeep is an accomplished professional with over 14.5 years of experience in the commodities market. Currently, he serves as an Assistant Manager Business Development at MCX, Multi-Commodity Exchange of India. Throughout his career, he has actively conducted seminars and webinars to spread awareness about commodity products among members, associations, and institutions. Ahead of time, he was associated with Sharekhan and IIFL, India Infoline Group, further strengthening his expertise in financial markets and making significant contributions in the financial and trading domain. His knowledge in market trading strategies, and derivatives will surely add great value to our understanding today. Without further ado, let's give a huge round of applause as we welcome Mr. Jaydeep to take the dais. Great to see you all. First of all, I would like to thank Roy sir, Ricky ma'am and RD sir. So, giving me a chance to be here to interact with you all. So, as she mentioned earlier, I am a part of business development, M6. Okay. So, all of you knows what is commodity market. Any idea about commodity market? Acha, anyone knows equity market? What is equity market? So you have not started yet this in this financial year or this academic year about equities and commodity? Not yet. Okay. So I will introduce what is exactly the financial market, what we have, and accordingly, right? Okay. So equity market first we'll see that, then we'll come to commodity, because in India, so अक्रॉस द वर्ल्ड अगर आप देखोगे सो कमोडिटी मार्केट सबसे बड़ा है, करेंसी मार्केट बड़ा है, देन इक्विटी मार्केट. बट एज इन इंडिया अगर बीएसई की हिस्ट्री देखोगे सो 150 साल पुरानी है. सो बीएसई इज एक्टिव मोर देन 150 इयर्स इन इंडिया. ओके,
So what is equity? So shares. Okay, shares क्या होता है? So being मेरा एक ABC कोई कंपनी है, okay, I am dealing with one product. ओके, सो प्रोडक्ट एक्सपांड करना है, मेरे पास प्रॉफिट हो रहे हैं, बट सो नॉर्मली व्हाट वी डू, जब हमें बिजनेस एक्सपांड करना हो तो वी रिक्वायर वर्किंग कैपिटल, राइट? आर यू ऑल विद मी? रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की. सो व्हाट आई विल डू फॉर दैट? सो व्हाट नॉर्मली वी कैन डू फॉर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? पैसा चाहिए तो मैं ऑर्डर्स बड़ी ले सकता हूँ और ऑर्डर्स पूरी कर सकता हूँ. So for now, if I want to expand my business, what should I do? पैसे के लिए क्या करना चाहिए? या normally what a businessman or normally what is actual requirement? What is actual requirement? How much requirement is for me for cash requirement to fulfill my cash requirement? Okay. So one share. Suppose करो कि मुझे 10,000 शेयर लिस्ट करने हैं. Okay. X नंबर N नंबर ऑफ अमाउंट, 1 रुपया 10 रुपया जो भी है, तो उससे मैं 50% अलॉट करूंगा जिसके लोग सब्सक्राइब करेंगे एंड देन IPO लिस्टिंग जिसे बोलते हैं. और जब शेयर लिस्ट होता है सो मेरा सेकेंड फेज यानी इक्विटी मार्केट स्टार्ट होता है. सो मैंने लिस्ट कर दिया, मेरा मार्केट में बहुत अच्छा नाम है एंड वेर इन माई शेयर्स आर सब्सक्राइब, इट इज ओवर सब्सक्राइब, देन अलॉटमेंट प्रोसेस होता है एंड देन शेयर्स आर बीन अलॉटेड और आपके डिमेट में आते हैं जिन लोगों ने अप्लाई किया था. ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब है तो लिस्टिंग जो होती है उसमें शेयर्स प्रीमियम पे नहीं खुलते हैं या फिर उसके प्रोसेस होते हैं. ओवर सब्सक्राइब हुआ तो सभी को नहीं मिल पाता है, एक प्रोसेस होता है वेर इन दे अलॉटमेंट इज डन एंड अकॉर्डिंगली द प्रोसेस गेट फुलफिल्ड. लिस्ट हो गया शेयर, इक्विटीज आ गई एंड देन जिन लोगों को नहीं मिला है दे कैन इन्वेस्ट ऑन इक्विटी मार्केट. ओके, so this is the primary market wherein shares are traded. So what is cash? That is equity shares what I purchase. So equity share जैसे आप बैंक में you have saving account, right? Saving account होता है, okay? Saving account खुलता है, right? We do have current account, right? Right? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करना है तो सेविंग अकाउंट ही करंट अकाउंट होता है, राइट? उसके अलग कंडीशंस होते हैं, उसके अलग फैसिलिटीज होती है. सो व्हेन आई एम सेइंग सेविंग अकाउंट खुलने के बाद उसका क्राइटेरिया आता है, वैसे ही जब अगर आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट करना है तो यू शुड हैव अ डीमैट अकाउंट. एनीवन, एवरीवन नोज व्हाट इज डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट पता है एवरीवन व्हाट इज डीमैट अकाउंट? सो डीमैट अकाउंट इज वेयरिन शेयर्स आर बीइंग केप्ट इन अ डीमैटलाइज्ड फॉर्म. सो आपके n नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैं, उनके थ्रू आप एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं. ऑल ऑफ इट बीन क्लियर है यहाँ तक? सो एक शेयर इक्विटी का मैंने अगर परचेज कर लिया तो T+2 T+1 सेटलमेंट होती है वेयरिन माय डीमैट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द शेयर नंबर ऑफ शेयर्स हाउ मेनी आई हैव परचेज एंड बैंक अकाउंट से मेरा पैसा निकलता है, सामने वाले पार्टी को जाता है. क्लियर है? इट हम लोग कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन वेयरिन आई बाय वन शेयर एंड इट इज been dematerialized, the share is and it comes in my demat account wherein पैसा अकाउंट से जाके दूसरे के पास चला जाता है. So this is a transaction which we call as a cash transaction. Okay, one share I have to pay full and it gets settled. मैंने मेरा शेयर बेच दिया तो जिस सामने वाले को जिसको बेचा है that demat form में holding you initially when we are looking up going to look commodity market, it is a derivative market. Now what is a derivative? कैश आप समझ गए, what is equity market? कैश ट्रांजैक्शन समझ गए. सो व्हेन अगर मुझे ना एक बंडल बनाना हो, फॉर एग्जांपल कैश एक शेयर बाय किया, 2 शेयर बाय किया, वैसे अगर 2000 या 5000 का एक बंडल बना लिया. ओके, सो इन दैट केस देयर आर कंडीशंस फॉर डेरिवेटिव मार्केट, व्हाट वी कॉल्ड एज डेरिवेटिव. सो व्हेन आई से डेरिवेटिव मार्केट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी डेरिवेटिव मार्केट. सो डेरिवेटिव मार्केट की अगर मैं बात करूं, सो डेरिवेटिव मार्केट में बंडल होता है. सो वेरिन उसके कंडीशंस हैं, अगर एक बंडल परचेज करते हैं वेरिन यू डोंट हैव टू पे फुल अमाउंट. ओके, उसके एक्सपायरी होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी के साथ रेंट एग्रीमेंट करते हैं, ओके, इन केस वेयर यू विल गो फॉर अ रेंट एग्रीमेंट वेरिन आपको क्या करना होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, राइट? रेंट एग्रीमेंट करते हो किसी से, शॉपकीपर शॉप लेना है तो एग्रीमेंट होता है कि नहीं?
उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना, वैसे ही डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वेरिन इट हैव एक्सपायरी। जैसे एग्रीमेंट में आपको एक्सपायरी होती है कि 11 महीने की या 12 महीने की, वैसे ही रेंट जब आप कॉन्ट्रैक्ट में डील करते हैं यू विल हैव वन एक्सपायरी वेरिन वो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम लोग इनिशियली कुछ डिपॉजिट्स भरते हैं या फिर एक छोटा सा रेंट एग्रीमेंट में एक होते हैं कि इतनी अमाउंट हर महीने देना है, वैसे व्हेन यू डील विद डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट वेरिन उसके आप डिपॉजिट नहीं, उसमें आपको इनिशियल मार्जिन देना होता है और वो मार्जिन देके आप वो कॉन्ट्रैक्ट यू कैन बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? सो नाउ व्हेन आई एम डीलिंग विद इक्विटी कैश आई हैव टू पे फॉर 1 or 2 or 10 any number of shares I will take it, I will buy it and I will pay it T1 plus settlement, trade plus 1 settlement. Okay, but when I am dealing with commodity derivatives or equity derivatives, so derivatives का होता है कि उसका जो बंडल होता है वो बाय करने के लिए you have to pay a initial amount, wherein वो initial amount उसके expiry तक आप रख सकते हो, but condition you have to maintain your MTM, M2M, okay, mark to market. So M2M क्या होता है? Mark to market. 1 रुपी में बाय किया, कल को वो 1 रुपी 25 पैसा हुआ, so your account will be credited with 0.25 पैसा, wherein अगर वो 0.75 पैसा है your account will be debited by 0.25 पैसा. Clear है? You have to maintain because you are not paying full amount, you are paying initial amount. Clear है? So initial amount कितने भी हो सकते हैं, 10%, 15%, but not a full amount. So full amount when you have to pay when you will buy that contract. Okay? एक्सपायरी के दिन अगर आप बोलते हो कि 1000 का शेयर का एक्स नंबर एबीसी कंपनी है, उसका शेयर अगर मुझे बाय करना है एट द एंड एक्सपायरी के दिन you have to pay full amount and it will get settled in your demat account. Clear है? So derivative is a contract wherein it have a condition, we have to pay initial margin and accordingly it have expiry and accordingly you can roll over or you can settle that contract. So today we are going to see a derivative contracts which have any underlying. So what you mean by underlying? So when you say term derivative contract, so any contract have other means different underlines. If I put equity share in it, it will be called as a equity derivative contract. मैंने equity निकाल लिया, उसमें मैंने gold डाल दिया, so it will be called as commodity derivative contracts. wherein मैंने उसमें अभी USD INR डाला. So what is USD INR? That is forex. करेंसी के बारे में कुछ जानते हो आप? Because when I am saying commodity market, so currency are closely tracked for commodity derivatives. So commodity derivatives की बात करो तो USD INR की बात आती है. So what is USD INR? Anyone? What is USD? US dollar, right? What is exactly price of US dollar right now? 85 point something. So what actually it means US dollar? 85 points. What is USD INR? What is the relation between USD INR? So when she say 85 point something, that means if I have to buy 1 US dollar, I have to pay Indian 85 rupees. Clear है? Okay? So whenever I have to buy 1 US dollar, I have to pay 85 rupees. Now tell me, if I have to pay 85 की बजाय 87 rupees, so my currency is weak or strong? Sorry? Great. If I pay 82 rupees, then my currency is appreciating, my Indian currency is appreciating or it is depreciating? Clear है? So when I am saying कि there is a correlation between USD INR and commodity, that it means what we are dealing or today what we are going to see commodities, all commodities are international commodities. Gold कितना प्राइस है? Sorry, lady बोली पहले. 1 lakh. Yes ma'am. 90,000. So do you think this 90,000 what the price is derived? It is from India. Do we have mines in India? Mines है commodity यानी gold जहाँ से dig होता है mines से आता है बाहर. अपने पास है उतने? है नहीं है. So normally the gold mines are in South Africa majorly. Okay. So what we do वो mines से we import करते हो. So on an average yearly more than 900 metric tons gold we do import.
okay, mainly for consumption purpose, major part jewelry, ठीक है. So when you are importing gold, तो do you think डॉलर और यूएसडी का इम्पैक्ट रहेगा उस पर, यूएसडी आईएनआर का? बट ऑब्वियस, अगर रुपी एप्रिशिएट होता है सो वी हैव टू पे लेस, और वही अगर यूएसडी डेप्रिशिएट होता है तो हमें ज्यादा, ठीक है. क्लियर है कॉन्सेप्ट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट कमोडिटी डेरिवेटिव्स, वी सॉ व्हाट इज इक्विटी मार्केट, नाउ वी आर विद कमोडिटी मार्केट. नाउ व्हाट इज एक्सचेंज? आई एम अ पार्ट ऑफ एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. सो व्हाट इज एक्सचेंज, पहले वो जानिए. ओके, सो एनी आइडिया अबाउट एक्सचेंज अपार्ट, वहां पे कुछ लिखा है उसको छोड़ के, एनी आइडिया, गेसेस, व्हाट इज एक्सचेंज? यूनिवर्सिटी होती है, उनके नीचे कॉलेजेस होते हैं, एज आई मेंबर. सो एक्सचेंज इज अ रेगुलेटर फॉर ऑल मेंबर. सो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं, वी डू हैव मोर देन 365 मेंबर्स, ओके, रजिस्टर्ड मेंबर्स. सो रेगुलेटरी प्रोस्पेक्ट से अगर सेबी इज द ऑथोरिटी जो ऊपर है हमारे, मेंबर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं, उनके यहाँ पे क्या है, वो सारी चीजें सर्विलेंस पे होती हैं. सो नॉर्मली व्हेन आई से एक्सचेंज, द मेन कोर फंक्शन ऑफ एक्सचेंज इज मैनेजिंग प्राइस, नॉट मैनेजिंग बट प्राइस रिस्क मैनेजमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ प्राइस, ये कोर फंक्शन होता है. So it is a marketplace wherein buyer seller, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे है, अर्लियर रिंग ट्रेड होते थे. सो इक्विटीज की अगर आप बात करोगे तो ब्रोकर्स होते थे, वो रिंग ट्रेड करते थे. बट अभी एक्सचेंज टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड मेनी थिंग्स, वी कैन बाय एनीथिंग, मींस आप जो भी अंडरलाइन से कोई भी पार्ट के इंडिया से बाय सेल कर सकते हो. सो मेन फंक्शंस अगर आप देखोगे तो इट इज टू एंश्योर द फेयर ऑर्डरली ट्रेडिंग एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस इंफॉर्मेशन फॉर एनी securities, not only securities, any underlying, that is commodity, equities, other financial instrument or forex. Clear है? So exchange plays an important role. So when I say exchange play an important role, तो exchange पे क्या ट्रेड होता है? So there we do have a spot market and derivative market. Derivative market की अभी भी मैंने बात की है. So what is spot and derivative? So when, देखिए ये सारी चीजें लिंक है एक दूसरे से. When I say spot market, the spot market is your jeweler. गोल्ड खरीदने कहाँ जाते हो? सॉरी, हाँ, ज्वेलर. सो वो स्पॉट डील होती है. सो वेयर आई पे कैश एंड आई टेक 1 ग्राम, हाफ ग्राम, जो भी है, द ट्रांजेक्शन इज सेटल्ड देयर ओनली. स्पॉट एक्सचेंज पे, यानी वहीं पे. स्पॉट एक्सचेंज इज अ स्पॉट. इंडिया में काफी मंडीज है. वी डू हैव दिल्ली, मुंबई, जवेरी बाजार, वी डू हैव चेन्नई, यानी जो मेट्रो सिटीज है वहाँ के कोल्ड यानी कोट होते हैं प्राइसेस, एंड अकॉर्डिंगली 12 o'clock एंड 5 o'clock दो भाव सेटल होते हैं. अकॉर्डिंगली पूरे इंडिया में वही भाव से ट्रेड होता है उस दिन के लिए. तो दिस व्हाट वी कॉल एज अ स्पॉट ट्रेड. अकॉर्डिंगली आपका ज्वेलर जो आपको कोट करता है, दैट इज अ स्पॉट. बट अगर मैं फीचर्स या फिर डेरिवेटिव की बात करूं, वी हैव फॉरवर्ड मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट. सो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स क्या है? सो व्हेन आई से फॉरवर्ड आर द एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी. फॉर एग्जांपल, फॉरवर्ड और फीचर्स में, फीचर्स व्हाट वी हैव ऑन अ एक्सचेंज इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड सेंट्रल रेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, वेरन मैं अगर फॉरवर्ड की बात करूं तो वो ओटीसी होते हैं. सो ओटीसी क्या होता है? सो अर्लियर अगर आप देखते तो एक कोई भी जो व्यापारी होता था एंड फार्मर, उनके बीच में डील होती थी. इफ योर हार्वेस्ट इज रेडी, सोयाबीन हो, एनीथिंग हो, सो 2 महीने बाद आई विल परचेज फुल एंड आई विल पे यू एक्स अमाउंट. ओके, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज बीन डन टुडे फॉर 2 months लेटर. बट उसमें कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता था, बोली पे होता था. सो नाउ व्हाट हैपेंस, जब वो हार्वेस्ट आता है, सो मेज हो या फिर कुछ अदर प्रोडक्ट हो, बट वो जब आता है, अगर मार्केट में उसकी डिमांड नहीं हो, अगर डिमांड सप्लाई ज्यादा हो, तो व्यापारी क्या करता था? उससे कम दाम मांगता था, बिकॉज कहीं पे लिखा नहीं. सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था, वो कभी भी तोड़ा जा सकता था और मरोड़ा जा सकता था. सो नॉर्मली वेरिन as comparatively future contracts are very standardized contract which are traded on exchange.
जिसका सारा कुछ डिटेल यानी कौन सा प्रोडक्ट होगा, कितना प्रोडक्ट होगा, व्हाट विल बी द टाइम एक्सपायरी, व्हाट विल बी द अमाउंट प्रीडिटरमाइन होता है एंड इट इज बीन रेगुलेटेड बाय द एक्सचेंजेस. अगेन सो स्टैंडर्डाइज बात करूं तो फ्यूचर्स में ऑप्शंस और स्वैप होते हैं. So today we are going to see only future contracts. As well, I will touch base with the options also what we have in India on commodity contracts. Okay. So this stuff commodity market. Now we are going to see commodity market. So commodity market in India, it is very old market. So we do have big exchanges across the globe. These are the top 11, 12 which have been founded more than 100 to 100 years, wherein our BSE which is actively trading in equities from more than 150 years. So ये सारे वो exchanges हैं जहाँ पे अलग अलग commodities trade होती हैं. तो CME, LME, London Metal Exchange, from where it is the benchmark for the metals, London Metal Exchange. तो जितने सारे मेटल्स ट्रेड होते हैं, सो व्हाट वी डू हैव प्रोडक्ट ऑन आवर एक्सचेंज व्हिच इज बीन ट्रेडेड. सो उनकी अगर एज आई मेंशन अर्लियर आल्सो वी डोंट प्रोड्यूस एनी कमोडिटी. ओके, ऑल आर द इंटरनेशनल कमोडिटी. तो फॉर द बेंचमार्क प्राइस जो होती है वो कन्वर्जन के साथ अपने यहाँ पे ट्रेड होती है. सो वी कांट ट्रेड इन डॉलर, वी कांट ट्रेड इन यूरो. So we have to settle all the prices, or the quote what we get is in Indian rupee. So there is a conversion. Okay, उसके फिर calculations होते हैं. But these are the main all the exchanges where all the commodities are traded. So Nasdaq derivatives के लिए known है, Dubai Metal Exchange है, Mercantile Exchanges. These all other. So what we have in India, these are the regional exchanges. These are the big regional exchanges in India. So BSE, Calcutta Stock Exchange, right now it is not that active. There is no stock is being traded right now. But Metropolitan for equities, Multi Commodity Exchange, commodity derivatives, NCDEX, that is National Commodity Derivative Exchange, agro commodities, Indian Commodity Exchange and National Stock Exchange. So earlier, these are the big national exchanges. So what is difference between small exchanges and national exchanges? Earlier we used to have many exchanges within India. It is depends कि अगर गुंटूर में चिली है तो चिली की एक exchange होगी वहाँ पे. Earlier when British was there तो अपने महाराष्ट्र में और गुजरात, some part of Gujarat, or mainly Gujarat, we are very well known for cotton. When we are talking about commodities तो cotton, agriculture commodities में cotton. So British क्या करते थे, यहाँ पे port होता था मुंबई में, वहाँ से बाहर भेजते थे. सो नॉर्मली वी यूज्ड टू हैव अ कॉटन एक्सचेंज. लाइकवाइज राजस्थान में ऊंझा एक जगह है जहाँ पे जीरा होता है, वहाँ बड़ी मंडी है, तो वहाँ पे एक छोटा रीजनल एक्सचेंज होता था जीरा के लिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल एक्सचेंज आर द एक्सचेंज वेयर इन ऑल कमोडिटीज आर बीइंग ट्रेडेड विद ह्यूज वॉल्यूम्स. सो दिस आर द बिगेस्ट एक्सचेंज ऑफ इंडिया. सो इन टर्म्स में बिगेस्ट बोलता हूँ, बड़ी बोलता हूँ, तो दैट मीन्स द डे ट्रेडिंग, यानी एक बाई किया एक सेल किया तो जो वॉल्यूम बना वो वॉल्यूम के हिसाब से कितने बने हैं. ओके, सो ऑल आर द एक्सचेंजेस एक्टिवली ट्रेडिंग इन इंडिया. बट व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे इज M6 मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. एज आई मेंशन, आई एम अ पार्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट. ओके, सो कमोडिटी एक्सचेंज अगर मैं बात करूं तो 2003 में इट इज established in 2003, but it is not like that कि इसके पहले exchange नहीं थे इंडिया में. As I mentioned, छोटे छोटे regional exchanges हुआ करते थे. So normally when I say trading, commodity trades, तो it is अगर आप पहले राजा महाराजाओं के टाइम भी देखोगे तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होते थे. So एक किंगडम में ये चीज है और दूसरे में नहीं, तो they used to trade that cross border trade. Okay, then it is been now in 1970s में कमोडिटी एक्सचेंज हुआ करते थे, बट बिकॉज सम रीजन 1970s में इंडिया से कमोडिटी एक्सचेंज बंद हो गया एंड अगेन इट स्टार्टेड इन 2003. क्लियर है? वी डू हैव 544 रजिस्टर्ड मेंबर्स, 35,000 प्लस APs, that is franchises, and our presence is across 669. As I mentioned earlier, 2003-4 में commodity market establish हुआ.
2015 में सेबी एज एन रेगुलेटर आए, बिकॉज ऑफ सम रीजन कुछ चेंजेस हुए. व्हाट वी डू हैव ऑप्शन. 17 अक्टूबर 2017 से वी स्टार्टेड ऑप्शन. सो इंडिया में अगर आप बात करो तो इट इज द फर्स्ट लिस्टेड कंपनी, एमसीएक्स इज फर्स्ट लिस्टेड कंपनी. वी डू हैव ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वेर इन इंडिया में पहली बार ऑप्शन 2017 में इंट्रोड्यूस हुए. And now you will see, I will show the milestone which we have achieved over the period of time. So options are traded on commodity market. We do have options in gold, silver, aluminium, copper. We do have energy, crude and natural gas. So we do have integrated platform जो member जुड़े होते हैं सर्विस से, and the client which can trade through the सिंगल प्लेटफॉर्म, दैट इज एपीआई. आपका जो मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, आपके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, उसके थ्रू. सो ये सारा रहा इतिहास ऑफ कमोडिटी मार्केट. So we saw what is equity market, how cash market is settled. We saw what is commodity market, how commodity market is designed, mainly the derivatives. We saw the exchange, what product we do have. Now we'll see bit fundamental. So when I say bit fundamentals, what market we do have? Financial market. We do have capital market, debt market, forex, commodity and money market. So these are the financial market. Okay. अगर मैं बात करूँ capital market, all IPO as you said, equities are from the part of capital market. डेप्ट मार्केट की बात करूँ तो इंटरेस्ट रेट जो ट्रेड होता है वो डेप्ट मार्केट का पार्ट है. होपफुली आई थिंक अगले सेम में आपको डेप्ट मार्केट और इंटरेस्ट रेट मार्केट सिखाया जाएगा. तो डेप्ट मार्केट वो होता है जिसमें इंटरेस्ट रेट ट्रेड होते हैं. ओके. सो इंटरेस्ट रेट विच आर मोर देन 11 मंथ्स वो डेप्ट मार्केट में ट्रेड होते हैं, और जो छोटे हैं यानी 11 महीने के कम के कालावधि के वो मनी मार्केट में ट्रेड होते हैं. वही फॉरेक्स में यूएसडी आईएनआर ट्रेड होता है. सो वी डू हैव यूएस फॉरेक्स मार्केट टू. We do have commodity market, so we are going to see commodity market. So just एक simple question tell me, अगर कोई एक मार्केट में कुछ होता है तो उसका असर सारे मार्केट में आता होगा या नहीं? What you say? Yes, आता होगा या नहीं आता होगा? आता होगा. All are with me? सबको लगता है आता होगा? क्यों आता होगा? Sorry? Interlink. Great. So all market are interlinked because as I said कि forex market USD INR commodity market चलता है क्योंकि price import होता है. Equity market overall आपकी currency कैसी है. Debt market interest rate कैसा चल रहा है. Okay. So normally when I say capital market, अगर equity में कुछ होता है उसका सारा असर commodity में भी आता है. For example, एक example लेना चाहूँगा. So from example we can guess कि कैसे चलता है, क्या चलता है. So 24th March 2020 किसी को याद है? 24th March 2020 पीएम मोदी ने अनिश्चितता जाहिर की थी कि कभी तक खुलेंगे मार्केट, पता नहीं, बट अभी वेंट टू लॉकडाउन. तब क्या हुआ था मार्केट में, किसी को याद है? एनीवन गेस? सॉरी, मार्केट क्रैश हुआ था. व्हाई? मार्केट क्यों क्रैश हुआ? Equity market. So equity market do denote your financial or economic activities. अगर uncertainty है मार्केट में तो इक्विटी मार्केट से सारा पैसा था बुक कर लिया गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई और मार्केट क्रैश हुई, राइट? लिक्विडिटी खींच ली गई. ओके. सो वो लिक्विडिटी जब खींची क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेबल नहीं थी, अनसर्टेनिटी थी. ओके. एक्टिविटीज में सारा शटडाउन था, तभी कौन सी चीजें ऊपर गई थी? क्योंकि मार्केट में से एक पैसा निकलता है एक मार्केट से तो इट बट ऑब्वियस इट गोज टू अदर एसेट क्लास. कहाँ गया था पैसा? कमोडिटी मार्केट में. एग्जांपल गोल्ड के प्राइसेस ट्रैक किए थे किसी ने? गूगल कर रहे हो? हाँ, ग्रेट. डू गूगल व्हाट आई एम सेइंग, डू क्रॉस चेक दैट. गोल्ड जो कि आपका 32,000 के आसपास था उसने 55-58,000 का हाई लगाया था. दिस इज मेनली बिकॉज व्हेनेवर देयर इज अनसर्टेनिटी इन इकोनॉमी सो योर फंड्स गेट डाइवर्टेड. सेफ हेवन डिमांड माना जाता है गोल्ड को, सारे फंड्स गोल्ड में. ओके. सो और कई चीजों के कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़े थे. फॉर एग्जांपल फूड ग्रेन्स, राइट, मेटल्स, सबके प्राइसेस बढ़े थे.
बट वेरिन जब इक्विटी मार्केट का मैंने बात किया, कैपिटल मार्केट में कुछ हुआ, कमोडिटी मार्केट पे उसका असर आया, फॉरेक्स मार्केट में क्या हुआ? अगेन एज लाइक कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में भी जो यूएसडी 62 के करीब था, इट वेंट टू ऑलमोस्ट 70 to 73 यूएसडी आईएनआर. If you Google, you will see that 2020 से 23 के बीच में यूएसडी आईएनआर की मूवमेंट बहुत वॉलेटिलिटी थी और 60 to 63 से लेके 10 रुपए का एप्रिसिएशन यूएसडी में हुआ था, यानी अपना रुपये 20 हुआ. सो फॉरेक्स में भी आया, मनी मार्केट में इंटरेस्ट रेट, अगर एक मनी मार्केट देयर आर एन नंबर्स ऑफ टूल्स, जो फाइनेंशियल टूल्स होते हैं जो आपके लिक्विडिटी के लिए, इकोनॉमिक लिक्विडिटी के लिए यूज होते हैं, उसमें से एक होगा, जैसे अगर मैं बताऊं, सो अगर आप होम लोन्स की बात करें तो उसके इंटरेस्ट रेट होते हैं, पता है आपको इंटरेस्ट रेट? ओके, सो व्हाट आई मीन बाय इंटरेस्ट रेट, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू बाय अ हाउस, okay, so I will approach any bank to get a loan. So loan में वो लोग बोलेंगे कि आपको इतना लोन मिलेगा, for example 30 lakh, and your interest rate will be this much. का एक दूसरे से लिंक होता है, क्लियर है? Can I का एक दूसरे से लिंक होता है, क्लियर है? Can I move forward? So as I mentioned, commodity market के ये चार कीज हैं. So when I say market का टाइमिंग, व्हाट इज टाइम? अपने यहाँ जब 2 बजे होते हैं सुबह के 2:30 AM, तभी ऑस्ट्रेलियन मार्केट एक्टिव होते हैं, ठीक है? उसके बाद करीब 8 बजे के आसपास एशियन मार्केट एक्टिव होते हैं, देन इंडियन मार्केट, देन मिडिल ईस्ट मार्केट,